Hello students, I am Bhupendra Gehlot and I will be discussing some topics in thermodynamics. These topics are thermodynamic properties, state functions and path functions, and thermodynamic processes. Now first of all we take thermodynamic properties. Now thermodynamic properties are of two types: intensive properties and extensive properties. What do we mean by extensive and intensive properties? Intensive properties are the properties which do not depend upon the quantity of matter present in the system or size of the system, like pressure, temperature, density, melting point, boiling point, concentration, volume per mole. These are intensive properties. What are the extensive properties? The properties which depend upon the quantity of matter present in the system. For example, mass, weight, volume. So these are extensive properties. So whatever property any system is having, any body is having, if it depends upon the mass of or the quantity of matter present in the body, then it is extensive property, and if it does not depend upon it, then it is intensive property. So these are the two types of thermodynamic properties. Now we come to state functions and path functions. State functions and path functions. Now what do we mean by this? State function is any fundamental property which determine the state of a system, and these include pressure, temperature, volume, internal energy, enthalpy, entropy, free energy, number of moles. What is important about a state function is that the change in the state properties depends only upon the initial and final state of the system, and it is independent of the manner in which the change has been brought about. So we can say that the state properties or state function do not depend upon a path which has been followed. And what are path functions? Path functions are the properties which depend upon the state of the functions as well as on the path or the route by which the state has been reached. For example, work, heat, arc length. These are path functions. Then we come to thermodynamic processes. What do we mean by thermodynamic process? Whenever a thermodynamic system changes from one state to another, then the operation is called a thermodynamic process. The different types of thermodynamic processes which we have to study are: first is your isothermal process. Now what is isothermal process? Isothermal process, as the name indicates, that the temperature remains constant. That is, the temperature does not change. dt is equal to 0. That is, the heat is exchanged with the surroundings and the system is not thermally isolated. The only thing is that has to be kept in mind is that the temperature remains constant. Next is adiabatic process. Adiabatic process. What is adiabatic process? Adiabatic process means
the process is carried out under such condition that no exchange of heat takes place between the system and the surroundings. The system is thermally isolated. It was not thermally isolated in isothermal process, but in adiabatic the system is thermally isolated, and you can say dq is equal to 0. This can be done by keeping the system in an insulated container. For example, a thermos flask. Then third is your isobaric process. What is isobaric process? Isobaric process means the process is carried out at constant pressure, that is dP is equal to 0. Next is your isobaric process. What is isobaric? Isobaric process is the process in which the volume remains constant throughout the thermodynamic process. So here we have to write dV is equal to 0 because the volume remains constant. Then cyclic process. What do we mean by cyclic process? Cyclic process means when the system undergoes a number of different processes and finally returns to its original state or its initial state, then it is termed cyclic process. For a cyclic process, we have to say that dE is equal to 0 and dH is equal to 0. What is dE is equal to 0 means? dE is equal to 0 means that the total internal energy does not change, and dH equal to 0 means total enthalpy does not change in this process. Then we come to reversible process. What do you mean by reversible process? Reversible process is the process which occurs infinitesimally slowly. That is, the opposing force is infinitesimally smaller than driving force, and when infinitesimal increase in the opposing force can reverse the process, then this is reversible process. We can say that a reversible process is considered to proceed from initial state to final state through an infinite series of infinitesimally small stages, and at every stage it is virtually in a state of equilibrium. And one important thing about this is that a reversible process is an ideal process and it cannot be practiced or it cannot be realized in practical life. Then we come to the process irreversible process. What is irreversible process? It is just opposite of the reversible process. So what we can say is about irreversible process, when the process goes from initial to final state in single step in finite time and cannot be reversed, then it is irreversible process. In such a case, equilibrium state exists only at the initial and final stages of the process. An irreversible process is spontaneous in nature, and it is real and it can be practically performed, and most of the things which we see in nature, they are irreversible. I will discuss some topics or terms associated with thermodynamics so that we can understand the laws of thermodynamics better. First is internal energy. What do you mean by internal energy? All types of energy which are associated with a system, the total of those energies is called internal energy. जितनी भी हमारे पास एक बॉडी के अंदर एनर्जी है, चाहे वो रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, बॉन्डिंग एनर्जी हो, सबका जो टोटल है वो है हमारा इंटरनल एनर्जी. टोटल ऑफ
all energies। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं E, कैपिटल E से। ये हमारा एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो। स्टेट फंक्शन इसलिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, न कि पाथ पर। सो ये स्टेट फंक्शन है, नॉट path function. Then we have a term entropy. What do we mean by entropy? Entropy किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो है एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है which is a measure of randomness। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर रैंडमनेस कितनी है, कितना डिसऑर्डर है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना रैंडम है, उसमें कितना डिसऑर्डर है, कितनी रैंडमनेस है, अव्यवस्था कितनी है, केओस कितनी है, दैट इज एंट्रोपी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, कैपिटल एस से। ये भी हमारा एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ। ये हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन। देन वी हैव द टर्म एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंथैल्पी जो होती है हमारी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर हमें एंथैल्पी पता करनी है तो जो भी हमारा सिस्टम है उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे उसकी इंटरनल एनर्जी, तो इससे हमें मिल जाएगी हमारी एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, और एंथैल्पी भी हमारा एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हमारी जो भी इंटरनल एनर्जी है E, प्रेशर है P और वॉल्यूम है V, वो सब के सब हमारे स्टेट फंक्शन है। इसलिए एंथैल्पी जो कि इन सबसे बनी होती है वो भी हमारा स्टेट फंक्शन है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज एन extensive property. Then we come to the heat capacity. टर्म आता है थर्मोडायनामिक्स में जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या होती है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी, the quantity of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree। कोई भी सिस्टम है उसका अगर 1 डिग्री से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितनी हीट हमें चाहिए, जो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए, वो है उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी, और ये भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर हम उस सिस्टम की पर मोल हीट कैपेसिटी निकाल देंगे, उसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। और ये जब पर मोल हो जाएगी तो ये मास पे डिपेंड नहीं रहेगी, क्योंकि पर मोल है, इसका मतलब मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब हम सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो कि मेजर करता है किस चीज को, कितना वर्क हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम से ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर्स द वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना नॉन एक्सपेंशन वर्क है उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसको कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिकली क्लोज सिस्टम से, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिकली क्लोज सिस्टम। ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि इट इज ऑब्टेनेबल ओनली इन कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है इसकी? G इज इक्वल टू H माइनस TS। H यहाँ पर हमारी एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और S हमारा एंट्रोपी है, सिस्टम की एंट्रोपी। तो सिस्टम की एंट्रोपी और उसके टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको एंथैल्पी में से माइनस कर, तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गिब्स फंक्शन।